very good morning to all my dear children. Hope you all are fine and safe at home. Today in Communicative English, we are going to start a new lesson. That is your lesson number 9. And the name of the lesson is Uncle Ken at the Wicket. Now this lesson, as you can see from the heading only, title of the lesson shows that Uncle Ken at the Wicket. That means this lesson is related to the cricket. So you all will love to read this lesson and enjoy the story of Uncle Ken. The main character in the story is Uncle Ken, and what he does at the cricket stadium, that we have to see from the story. So all of you will first write today's date 4/2/2021 and classwork. Lesson number 9. Starter kit. Name the items you see in this picture. In a game of cricket, what does the bowler try to do? What does a batsman try to do? And what do the fielders try to do? And what does the wicketkeeper try to do? Now in this picture you can see this is a bat. These are the wickets. This is your ball and these are your pads. These are the 4 things that are always used in a cricket. So first we will write the names of these things that are shown in the picture. This is your bat, wicket, this is your ball, and these are your pads that are tied in the legs so that you don't get hurt in case the ball comes fast. So we have named all the terms that are seen in this picture. Now what does a bowler try to do? Bowler क्या करता है? Bowler tries to bowl the ball. Ball को वो बोल करता है, मतलब वो बॉल फेंकता है. What does the batsman do? Batsman try to play with the ball that bowler throws. और फील्डर फील्ड करता है. जो बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो बॉल जिस डायरेक्शन में जाता है वहां पर फील्डर होता है. वो फील्डर जो है वो बॉल को फील्ड करता है. और विकेट कीपर विकेट के पीछे जो बॉल्स आते हैं उसको कलेक्ट करने का काम करता है. You all know this very well because you all know a lot about the cricket and you all love to play cricket also. Now get set. Uncle Ken, Dad's younger brother, was living with us at Kanpur. Aunt Emily, the eldest of the 3 aunts, lived in Lucknow with her husband and 3 children. Now here the narrator or the writer of the story is narrating his story that Uncle Ken, he was his dad's youngest brother or the younger brother, and he was living in Kanpur. So where was Uncle Ken living? Uncle Ken was living in Kanpur. Aunt Emily जो थी उनकी aunt थी, she was and the eldest of the 3 aunts. Aunt Emily जो थी वो 3 aunts में सबसे बड़ी थी and she lived in Lucknow with her husband and 3 children. वो अपने husband के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ वो लखनऊ में रहती थी Aunt Emily. और Uncle Ken जो थे वो डैड के younger brother थे जो कानपुर में रहते थे. One day Uncle Ken announced that he was going to Lucknow to stay with आंट इमिली. अब एक दिन क्या हुआ कि अंकल कैन ने ऐसा अनाउंस किया कि वो लखनऊ आंट इमिली के साथ रहने जा रहे हैं. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 96. दिस वाज योर पेज नंबर 95. She has 3 children and a school to look after. Now Aunt Emily had 3 children and she was also working in a school. So she had to go to school also. And Granny also, and Granny don't stay there too long. तो Aunt Emily के साथ कौन कौन था? उनके 3 बच्चे थे, वो स्कूल में जॉब करती थी, और एक ग्रैनी थी जो उनके साथ रहती थी. तो ऐसा बोला गया कि आप जब कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं आंट इमली के पास रहने तो बहुत ज़्यादा दिन तक वहाँ मत रहिएगा, क्योंकि वो जो स्कूल में जॉब भी करती है और इतने सारे लोगों का घर में ध्यान भी रखती है. She doesn't mind how long I stay, said Uncle Ken grumpily, and off he went. So Uncle Ken, what did Uncle Ken said? That she will not mind as long as I want to stay, I will stay, because she will not mind my staying for a longer period of time. And Uncle grumpily means गुस्से में वहाँ से कह के वो चले गए. Uncle Ken's
visit to Lucknow proved very interesting and memorable. We heard about it much later. अब अंकल केन का जो विजिट था लखनऊ में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था and it was a memorable also. How it was memorable that we'll know now. So we heard about it later. That the narrator of the story is telling that we came to know much later that his visit, Uncle Ken's visit to Lucknow was very interesting and memorable. मतलब एक यादगार विजिट थी उनकी लखनऊ के लिए. ये चीज़ उनको बहुत बाद में पता लगी थी. स्टोरी जो सुना रहे हैं उनकी बात वो कह रहे हैं. यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अंकल केन हु इज बीन वेलकम्ड एट द लखनऊ स्टेशन. When Uncle Ken got down at Lucknow railway station, a large crowd gathered around him. जब जैसे ही अंकल केन लखनऊ स्टेशन पे उतरे तो एक बड़ा सा लोगों का जो ग्रुप था वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उनको वेलकम करने के लिए. Everyone was waving to him and shouting words of welcome in Hindi, Urdu and English. So everyone was waving towards him and they all were welcoming him in their own languages like Hindi, Urdu and English. Before Uncle Ken could make our what it was all about, his neck was piled high with garlands of marigold. He could hardly open his mouth to say a word. So Uncle Ken was very surprised that why so many people have come to welcome me. He was not knowing that why people are waving at him and shouting slogans for him in Hindi, English and Urdu. So before he could understand that what all is happening, his neck was piled with the garlands of marigold. That means so many people had come to welcome him and each and everyone was giving him a garland to welcome him. Everyone was making him wear a garland. मतलब सब उनको जो है garland पहना रहे थे और इतने सारे garlands उनके गले में गए थे कि पूरा उनका गला जो है गार्लैंड से भर गया था. इसलिए वो अपना कुछ मुंह खोलकर कुछ बोल ही नहीं पाए. ऐसी सिचुएशन उनकी आ गई कि ही कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड और ही कुड नॉट से एनीथिंग. ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई सच अ ग्रैंड वेलकम इज बीइंग गिवन टू हिम. A young man came forward and announced, "The Gomti Cricketing Association welcomes you to the historical city of Lucknow." और तभी वहाँ पर क्या हुआ, उसमें से एक आदमी, a young man came and made an announcement that the Gomti Cricket Association welcomes you to the historical city of Lucknow. You all might be knowing that Lucknow is a very historical city. A lot of history is connected to the Lucknow. The Mughal emperors were there, the buildings that are there. So there are many things that are connected to the history. So it's a historical city. It's a lovely city. So historical city भी है ये. तो वहाँ पर उसके क्रिकेट एसोसिएशन में से किसी ने एक ऐसे बोला कि इस आप हिस्टोरिकल सिटी में आपका स्वागत है. Then he quickly led Uncle Ken to a car that was waiting outside the station for them. और फिर उसके बाद क्या हुआ, फटाफट जो है अंकल केन को उस भीड़ में से बाहर निकाल के वो एक कार के पास ले गए जो स्टेशन के बाहर उनको ले जाने के लिए खड़ी थी. Now we move on to page number 97. Uncle Ken had no idea of where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. अब अंकल केन ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या ऐसा सब ये क्यों हो रहा है, इतना VIP मतलब बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है और ये उनको गाड़ी में बिठाकर कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं. दैट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. While he was yet wondering about all this, the car drove into the sports stadium. Only then Uncle Ken realized that he was expected to play in a cricket match. So he was just wondering that where I am going. And within some time the car entered the sports stadium. जिस कार में वो बैठे हुए थे वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में एंटर हुई और तभी अंकल केन को इस चीज़ का समझ आ गई कि ये लोग मुझे क्रिकेटर समझकर ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने आया हूँ. तब तक कार में बैठे बैठे अंकल केन यही सोच रहे थे कि ऐसा सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ. What had happened was in fact like this. अब क्या हुआ अंकल केन को by mistake, why Uncle Ken was taken to the cricket ground, that we will read now. The interesting part of the story comes now. Here till now Uncle Ken was just wondering that why such treatment has been given to me and why I am being taken to such a place.
Bruce Hellman, the famous English cricketer, was touring India and had agreed to play in a charity match in Lucknow. Now here the mistaken identity case जो होता है, मतलब गलत पहचान वाला जो केस होता है, वो यहाँ पर हुआ. और ये स्टोरी अब शुरू होती है कि अंकल केन को किसकी जगह पर अंकल केन को गलती से वो व्यक्ति समझकर अंकल केन को ले जाया गया. अब एक ब्रिटिश के फेमस इंग्लैंड के एक फेमस क्रिकेटर थे जिनका नाम था ब्रूस हेलमैन. वो इंडिया का टूर कर रहे थे और उन्होंने एक चैरिटी मैच के लिए लखनऊ में खेलने के लिए हाँ कहा था. वो अग्री किया था कि हम एक चैरिटी मैच खेलेंगे. मतलब चैरिटी मैच का मतलब क्या है कि जो मैच खेलने से जो भी पैसा इकट्ठा होता है टिकट का या जो भी कलेक्शन होता है, दैट इज टू बी गिवन फॉर द गुड कॉज. दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड. नो क्रिकेटर और एनीबडी एल्स विल टेक दैट अमाउंट. ओनली that amount will be used for the good cause to be distributed among the poor. मतलब पुअर लोगों के लिए या कोई अच्छे काम के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाएगा. The previous evening he was in Delhi and had gone to bed with an upset stomach, so he hadn't been able to catch the train. अब क्या हुआ उसमें कि ब्रूस हेलमैन जो लखनऊ आने वाले थे चैरिटी मैच खेलने के लिए, लेकिन उससे एक दिन पहले वो दिल्ली में थे और वहाँ पर ही हैड एन स्टमक अपसेट, मतलब कि उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए दूसरे दिन वो लखनऊ की ट्रेन पकड़कर लखनऊ नहीं आ सके. देन ही सेंट अ मैसेज टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द match in Lucknow, but they didn't get it. So he sent a message, Bruce Hellman sent a message to the organizers of the Lucknow Cricket Association that because of his stomach ailment, he is not able to come to Lucknow and he will not be able to play the charity match. But that message was not conveyed, or they didn't receive that message which was sent by Bruce Hellman. So the Cricket Association did not receive that message. The cricket fans of Lucknow had arrived at the stadium in droves to welcome the great cricketer, and by a strange coincidence, Uncle Ken looked a lot like Bruce Hellman. अब वहाँ पर जो क्रिकेट फैंस थे लखनऊ में, ऑलरेडी वो लोग स्टेडियम में आ ही चुके थे. बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ चुके थे उनका वेलकम करने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर. एंड नॉर्मली मैनी पीपल माइट नॉट हैव सीन हिम, एंड ब्रूस हेलमन एंड अंकल केन वर क्वाइट सिमिलर इन द लुक्स. मतलब अंकल केन जो थे वो ब्रूस हेलमन से क्वाइट सिमिलर थे, देखने में बहुत कुछ सिमिलर लगते थे. इसलिए जो वहाँ जो लोग थे स्टेशन में, जब अंकल केन उतरे तो उनको ब्रूस हेलमन समझ के लोगों ने वेलकम किया. He had even a bald patch on the crown of his head, and he was wearing a blazer also, hence all the confusion. सो अंकल केन जब वहाँ से स्टेशन से उतरे तो उनके भी सर में ऐसे थोड़े बाल कम थे, जो वॉज अ पैच विदाउट हेयर. देन ही वॉज ऑल्सो वेयरिंग अ ब्लेजर. एंड एक कोइंसिडेंस था कि मतलब वहाँ पर एक जो ये स्ट्रेंज कोइंसिडेंस क्या था कि अंकल केन एक तो ब्रूस हेलमैन जैसे दिखते थे, उनके भी सर पे बाल ऐसे कम थे, एक जो मतलब क्राउन में हेड के पार्ट में उनको भी बाल कम थे, और उन्होंने भी ब्लेजर पहना था. तो ये सारा कन्फ्यूजन जो था उसको उनके जो गेटअप को लेकर, उनके लुक्स को लेकर ही हुआ. Uncle Ken received a rousing reception and a magnificent breakfast at the stadium. As he reached the stadium, he was received rousing reception means a बहुत ही अच्छा reception, a warm, very warm welcome was given to him, and a very magnificent मतलब बहुत ही शानदार breakfast उनको stadium में मिला. Now he felt that it would be very unsporting on his part if he refused to play cricket for them. Then he realized that now it is time, that if I say no, then they all will get dejected, and it is wrong if I say that I am not Bruce Hellman and I am Uncle Ken and I am not going to play the cricket. तो उनको ऐसा लगेगा कि वो एक अनस्पोर्टिंग सा, एक खराब ऐसा काम लगेगा कि मैंने किया है. तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्रिकेट खेल ही लेता हूँ. If he hit a tennis ball he missed, I ought to be able to hit a cricket ball also. तो उन्होंने क्या सोचा कि if he refused to play cricket for them, if I can hit a tennis ball, अगर मैं एक टेनिस बॉल हिट कर सकता हूँ तो sure I can hit a cricket ball also. He mused, I ought to be able to
hit a cricket ball also, and luckily he had a white shirt and a pair of white trousers in his suitcase. तो मनी में सोच रहे थे कि अगर मैं टेनिस बॉल को अगर हिट कर सकता हूँ तो मैं क्रिकेट बॉल को भी कर ही सकता हूँ, ऐसा मन मन में सोच रहे थे. एंड लकीली दैट टाइम व्हेन द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, इट वाज प्लेड इन white dress, complete white dress. White shirt and white trousers was to be worn while playing a cricket game. So luckily Uncle Ken had a pair of white trousers and a pair of shirt in his suitcase also. The Gomti team won the toss and decided to bat. Uncle Ken was expected to go at number 3, Bruce Hellman's normal position. He soon found himself walking into the wicket. अब गोमती टीम एसोसिएशन जो थी उनका और किसी एक और टीम का मैच हो रहा था, तो अंकल केन वाज टू बी प्लेड फ्रॉम द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वो खेल रहे थे, और ब्रूस हेलमैन नॉर्मली 3rd पोजीशन पे वो बैटिंग करने जाते थे फील्ड में, इसलिए ऐसा ही सोचा गया कि अंकल केन भी 3rd पोजीशन पे ही बैटिंग करने के लिए जाएंगे. और थोड़े समय में ऐसा देखा कि अंकल केन जो थे विकेट पे जा रहे थे. दैट मीन्स ही वॉज वॉकिंग टू द विकेट, ही वॉज गोइंग टू प्ले द क्रिकेट, ही वॉज ऑन द ग्राउंड्स. The first ball he received was a short-pitched ball. He was able to deal with it in a tennis fashion. It went to the mid-wicket boundary. The crowd cheered hastily. मतलब अंकल जब पहली बॉल अंकल ने खेली तो एक शॉर्ट पिच बॉल थी. दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द क्रिकेट इन बॉलिंग. तो एक शॉर्ट पिच्ड बॉल थी, पर अंकल केन ने उसको जैसे टेनिस में जैसे बॉल को हिट करते हैं वैसे ही टेनिस बॉल समझ के उन्होंने वो हिट किया, और वो मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से वो क्रॉस द बाउंड्री. सो एवरीवन इन द क्राउड वाज वेरी हैप्पी because they had all come to see Bruce Hellman playing cricket. The next ball hit Uncle Ken on the pad. He was right in front of the wicket. He should have been given out leg before wicket, LBW, but the umpire hesitated to raise his finger. Now जो दूसरी बॉल थी वो उनके पैड पर लगी और वो विकेट के बिल्कुल सामने ही खड़े थे. जब विकेट के आप सामने खड़े हो और बॉल पैड पे लगे तो आप नॉर्मली जो होते हैं बॉलर्स जो है LBW लेग बिफोर विकेट का अपील करते हैं, और ऐसा हुआ भी. लेकिन जो अंपायर थे वो उनको थोड़ा हेजिटेशन हुआ क्योंकि अभी तो ब्रूस हेलमैन खेलने आए एंड द सेकेंड बॉल ही वॉज गोइंग टू आउट, सो द अंपायर डिडंट गिव हिम आउट. After all, hundreds of people had paid a lot of money to see Bruce Hellman play it, and it would be a shame, disappointment, a sheer disappointment for them. तो एम्पायर ने ऐसा सोचा कि इतने सारे लोगों ने जब इतने महंगी टिकट्स खरीद कर they have come to see the match, how the Bruce Hellman is playing the cricket. They have specially come to see Bruce Hellman playing cricket, and if he gets out in the second ball itself, then it will be a very disappointing thing for the spectators to see him out so early because they have just come to see him playing. So the umpire also gave him not out. Not out, said the umpire. The third ball took the edge of Uncle Ken's hat and passed away through the slips. It went to the third man boundary. Now the third ball came and the third ball took the edge of the Uncle Ken के बैट्स के हैट के जो है मतलब ऊंची बॉल थी और उसके हैट से टच करके जो है वो भी थर्ड मैन बाउंड्री से ऊपर गई. लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द पवेलियन. सो पवेलियन में बैठे हुए द पीपल हु वर सिटिंग इन द पवेलियन, यू ऑल नो व्हाट इज अ पवेलियन. सो पवेलियन में बैठे हुए थे, दे ऑल वर वेरी हैप्पी एंड exclaimed there was an elderly person who was sitting in the pavilion. He said, what a lovely shot. A classic late cut, said another. Means everybody was praising the game that was being played by Uncle Ken, जिसको कि the people were thinking him as Bruce Hellman. It is a mistaken identity case. Uncle Ken had another 4 runs to his name. Then it was over and the other batsmen had to face the bowling, and the over complete हो गया and the other batsman other side had to face the bowling. He took off a run of the first ball and called for the second one. Uncle Ken thought that 1 run more was then enough, but when the other batsman started running, he couldn't refuse to run. He was halfway down to the pitch when the fielder hit the wicket. There could be no doubt this time Uncle Ken was run out.
अब क्या हुआ, जब मैच द ओवर कंप्लीट हो गया, then the other side, the other batsman had to play face the bowling. Now on the first ball only he hit and they took 1 run. So Uncle Ken did not want to take the second run, but the batsman on the other side started running because he wanted to take a second run. So Uncle Ken could not refuse the batsman that not to take the second run, so he also started running. But he had just reached halfway down the pitch that when the fielder hit the wicket and he was run out. And this time there was no doubt that the wicket had hit. He could not reach the pitch, to the wicket, and the fielder had hit the ball to the wicket, and no doubt, there was no doubt this time, and he was run out. Moving on to page number 99. Uncle Ken returned to the pavilion on a sympathetic applause of the crowd. Now this time umpire could not help Uncle Ken and he had to return to the pavilion with a sympathetic applaud. मतलब लोगों को ऐसा लगा कि the other batsman was at mistake. मतलब by the mistake of the other batsman, Uncle Ken was out. Not his fault, said the elderly gentleman. The other batsman shouldn't have tried to take 2 runs. That wasn't a run there. So the elderly man, the gentleman who was sitting in the pavilion, said that it was not the fault of the Bruce Hellman or the Uncle Ken at that time, that it is the fault of the other batsman who was on the other side. He should not have taken the second run because that run was not there only. Uncle Ken enjoyed a hearty tiffin. Then he slipped out of the stadium, took a tonga and reached Aunt Emily's house. अब जब वो वहाँ से आउट हो गए तो उन्होंने वहाँ पर अपना लंच कंप्लीट किया और उसके बाद वो धीमे से जो थे चुपचाप वहाँ स्टेडियम से बाहर निकल गए और आंट इमली के घर पहुँच गए. Aunt Emily's house he reached. He was just in time for the second lunch with Aunt Emily's family. He was presumed at the station that Bruce Hellman has left early to catch the train to Allahabad, where he is expected to play another charity match. लेकिन स्टेडियम में सबको ऐसा ही लगा. Everybody presumed that he has left the stadium because he had to catch the train to reach Allahabad, where he was supposed to play another match. So everybody thought that he has left the stadium to reach Allahabad. Aunt Emily, a forceful woman, fed Uncle Ken for a week. Then she put him to work in the small boys' dormitory of her school. It was several months before he was able to save up enough money for a ticket to Granny's place. Now, Aunt Emily was a forceful woman. Miss Aunt Emily जो थी वो बहुत ही मतलब दूसरों के साथ अच्छे से काम करा सकते थे वैसी थी, और उन्होंने अंकल केन को 1 वीक तक तो खिलाया. उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंकल केन को भी काम पे रख दिया इन द स्मॉल बॉयज़ डॉर्मेट्री जो होती है वहाँ पर. उन्होंने उनको काम पे रखा. डॉर्मेट्री मीन्स एक रूम होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे सोते हैं. इन हॉस्टल, लाइक इन अ हॉस्टल, तो एक रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं और सोते हैं. दैट इज़ अ डॉर्मेट्री. तो वहाँ पर उनको रखा गया. इट टुक मंथ्स बिफोर ही वॉज एबल टू सेव अप सम मनी. और अंकल केन को बहुत समय लगा उनको वो पैसे बचाने के लिए और एक टिकट खरीदने के लिए ग्रैनी के पास जाने के लिए. But he had the satisfaction of helping the great Bruce Hellman to add 8 runs to his grand total. The scorebook of the Gomti Cricket Association had recorded this feat for all the time. अब क्या था, Uncle Ken was very happy that at least he had done something good by helping out the Bruce Hellman. Bruce Hellman को help करके indirectly he helped Bruce Hellman उनके अपने पर्सनल स्कोर में 8 रन्स बढ़ाने के लिए, और गोमती क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी ये मेमोरेबल डे रहा कि Bruce Hellman had come and played a charity cricket match. So, dear children, from this lesson we learn that sometimes doing something good without speaking anything also can do some good to the people. जैसे कि अंकल केन ने किया, वो जानते थे कि वो ब्रूस हेलमैन की जगह खेल रहे हैं, पर उस वक्त अगर वो बोलते कि मैं ब्रूस हेलमैन नहीं हूँ तो बहुत सारे जो thousands of people who had come to welcome him to see the match
डिजेक्टेड, कॉट ए डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट, पर अंकल केन ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने क्रिकेट खेल के एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, दैट समटाइम्स वी नीड टू डू सच थिंग्स व्हेन द सिचुएशन अराइजेस. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइज.